इजिप्ट पे टैक्टिकली थोड़ी सी बात करेंगे. उनके कोच तो ये कह रहे हैं कि दे विल बी लुकिंग टू कंटेन दोज सेट पीसेस एंड डीलिंग विद दोज एरियल बॉल्स उनकी स्ट्रैटेजी का पार्ट होगा. डू यू थिंक दे विल बी सक्सेसफुल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? आई थिंक दे शुड बी एबल टू, बिकॉज एक इरन कुंदा में उनका मेन स्ट्राइक है, मेन जो थ्रेट है ऑफ काउंटर अटैक. बट हुशाम हसन की हम बात करें तो इनकी भी लेगेसी 1990 से बड़ी कनेक्टेड है, बिकॉज अल्जेरिया के खिलाफ इन्होंने गोल किया था टू गेट इजिप्ट बैक आफ्टर 54 years into the World Cup, and he was a striker. His brother was the right back. Now he's the manager, and his brother is the assistant manager. Love that. So there's a lot of connections of the 1990 team, and with this Egypt team, the beauty is that generally, up African sides, you'll see. We talk about sides like Ghana. You see them defending first and then attacking on the counter. But in this match, they are the protagonist. इजिप्ट की साइड होगी जो ज़्यादातर आपको अटैक करती देखती मिलेगी, जो पोजेशन होल्ड करती देखती मिलेगी. विद समबडी लाइक मोहम्मद साला, उन पे हमने बहुत बात की है. ऑल्दो उनका क्लब करियर में रोल डिफरेंट होता है ऑन द विंग, ऑन दिस साइड he'll drop deeper and actually get more connected in terms of the play going forward. But Mamouche up front, he's going to be the key man, because he's not just the present of Egyptian football, he's the future as well. They can still make a team around it for the next 4 years. उनके behind the lines जो run होंगे, even though they'll be sitting deep, but उनके जो from long range shots भी होंगे, I think they're going to be key for Egypt and make a difference in this game. तो आप fair to say कि out of possession Australia will be a back five? Yeah. राइट मतलब ये क्योंकि आपने बात की थी ना उस पहले कि 3-4-3 और 5 डेफिनेटली एक तो तुझे सेट करके दिया भाई चल उसने आपने कह दिया तो यस उसने डबी ठीक है उसने डबी कर डबी कर दिया he loves Australia in possession and out of possession. No, so talk about the formation in possession and out of possession. बिल्कुल I think out of possession they go with the back five, especially with 4 and then the striker up front, and out of possession they've usually transitioned into a 4-4-2, and again also we've also seen Popovic do a 3-4-3 against Paraguay as well. So they have fluidity in this team. They have tactical fluidity, but I think against a very good Egyptian side that's very good on the ball,